a debate at the level of presentation. But looking to the mood of the House and yielding to expediency that this is a House for positive dialogue, I allow leader of the opposition. So rather than being technical, even the Honorable Minister Bhupendra Yadav wanted to raise a point of order. I am fully alive to the rules. Rule 91 generates a constraint on me, Ram Gopal ji, that at the time of presentation this is not allowed. Finding mood of the House and to ensure that our accountability to the people, हमारा उत्तरदायित्व जनता की तरफ है, सार्थक चर्चा हो. तो इस विषय पर कुछ कहना चाहिए. Please, sir. No. We seek your protection. Please. You are the custodian not only of this house. Make your contribution. You are the second highest office in the country, sir. So we work under the constitution as well as set by the rules as well as the rulings given by the earlier on you, sir, the chairman. But how we deviate from that, sir? Any report whichever is submitted to the House, if a member in the committee is disagreeing with the report, sir, he is allowed to give a dissent note. That should also accompany. All the past reports have accompanied with the dissent. Why that should be deleted and how the chairman is interested with that power, the chairman of that committee, sir. So you have to come to our rescue and protect the rules and the proceedings. I have taken note of it. Functioning of the... Shri Sanjay Singh. Sanjay, you and some members have made a presentation to me. Yes, you and some members have made a presentation to me also. This is receiving my attention. Anything more? सर, आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर. मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में. और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा. हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए. विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर. अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है. आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं. कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे. हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, सर, Shri Bhupendra Yadav, first hear the minister. Allow me to 1 second. No, I will allow the honorable minister. Sir, point please. Honorable minister. Sir, मैं point of order raise honorable करना. minister, please. Yes, sir. And look sir, at me. सर, सदन में दो विषय कहे गए हैं. पहला, तिरुचि शिवाजी हमारे सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने रूल 274 कोट किया. 274 रिलेटेड विद द स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमेटी का जो प्रोसीजर है वो रूल 72 से लेकर रूल 90 तक दिया गया. और रूल 72 से लेकर लीडर ऑफ द हाउस, लिसन टू Now I request the leader of opposition to ensure protection. He is speaking. Let everyone listen to him. Now I request the leader of opposition to ensure that the house is in order and the members of the opposition are on their place, and then the house should continue. Take your seat. Honorable members, I will be constrained before the House ends proceedings today. I may take serious steps, severe steps. You would like to say something, Bhupendra ji? Go ahead. सर, सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर रूल 72 से लेकर रूल 92 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है. क्या कर रहे हो? मैं रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ रहा हूँ, जिसमें
चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है, if in the opinion of the chairman the committee of minute of dissent contains word, phrases or expression which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent. ये पावर तो रूल्स में दे रखी है, और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है, जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट ही में बी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है, और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। रिपोर्ट को रूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो इनकी मर्जी है। आज जब as per the listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. Honorable members, one second. Take your seat. Honorable members, will you keep shut? Honorable members, the Honorable Minister has, Leader of the Opposition, in categorical terms stated that no part of dissent or any input by a member has been deleted. The statements made in the House constitute an act of impropriety. When the minister has made categorical statement, if you think contrary, take recourse to rules. Such a categorical statement, no. A responsible minister, Parliamentary Affairs Minister, has categorically referred in this House to the report. He is focused that no part of dissent, no part of input has been alleged, has been deleted, and therefore all that has been said according to the Honorable Minister is factually untenable. It is untruth. We cannot allow this House to set afloat untruths. No. The Minister is categorical, and I find there is an effort to make this House dysfunctional. The Minister has categorically asserted nothing else will go on record. Nothing else will go on record. Honorable Finance Minister. Sir, the Minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this House as though there's a wrong thing. The Minister, in your presence, is saying the truth, and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the Minister know? Isn't the Minister the member of this House? How?
What is this kind of a misleading of the House by honorable members who are supposed to be familiar with the rules? It's outrageous, sir. Sir, after the observations made by the Honorable Chair, there is nothing left to be clarified. However, the member, Mr. Abdullah, has just made a remark which Finance Minister also had responded appropriately. He says that how does the Minister know? Not only being the Parliamentary Affairs Minister, the Waqf Amendment Bill is related to ministry which I am handling, Ministry of Minority Affairs. And from the day one, every assistance is provided. Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honorable members, just listen, some of the honorable members are here who are members of the JPC. They can clarify from the Ministry of Minority Affairs, is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own Secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं, हाँ तो खुद मेंबर है जेपीसी में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है। कितना ये अफसोस की बात है सर। May I now allow 0 hour Shri Pramod Tiwari. Would you like to raise? You allow them. What should be Sir, no, they have to go to their seats. No, they have to go to their seat. No, 1 second. No, first you go to your seat. First you go to your seat. Yes, please. Yes, Nasir. Yes. And secondly, they also go to their seats. Sir, sir, खड़गे जी, मेरा बैठे सर, आप बैठिए सर, पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम हाउस को शालीनता से चला सकते हैं, तो यदि अगर 2 या 3 सदस्य यहाँ आकर जो आचरण कर रहे हैं वो चिंतन का विषय है, प्लीज। एंड नहीं, दे हैव गॉन देयर एवरी टाइम आते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर ये जो हो रहा है इससे पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा है, और सुनिए, जिस आप बैठेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों के मत होंगे, अनेक मत होंगे, अनेक विचारधाराएं होंगी, और ये सदन उन विचारधाराओं का संगम बनेगा। यह सदन अंत में जो निर्णय करेगा वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से होगा, वाद विवाद के हिसाब से होगा। मैं एक सेकंड, आई कम टू यू साकेत, आई कम टू यू। मेरा एक सेकंड, एक मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, आप सबको इस बात का बोध है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी अहमियत क्या है। अंत में वो सदन के समक्ष आती है और समय के ऊपर सदन में वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, और यदि अगर एक समानता नहीं आएगी तो एक विधिक प्रक्रिया के अनुसार उस पर निर्णय होगा। अब निर्णय वेल में आने से नहीं होगा, निर्णय स्लोगन शाउटिंग से नहीं होगा, निर्णय होगा
आपके विचार की ताकत कि एक दूसरे को कितना परसुएड कर सकते हैं, और आखिर के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पद्धति है, जिस पद्धति के आधार पर सरकार का निर्माण होता है, उसी पद्धति से निर्णय होगा। तो मेरा यह कहना है कि अब इस विषय के ऊपर आगे न बढ़ते हुए मैं, आप बोले जीरो नहीं, पहले आप बैठिए। नहीं, मैंने नासिर का भी नाम लिया है और मैंने साकेत का भी लिया है, और दोनों से मेरा अनुरोध रहेगा। बैठिए साकेत, बैठिए बैठिए बैठिए। ओके ओके, ऑनरेबल मेंबर्स टू एक सेकंड, अरे मुझे सुनिए, एक बैठिए एक बार बैठिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट smooth functioning of the house, I will give brief opportunity to Nasir and Saket and then take up my business. Sir, you said so. Nasir. Nasir, 1 minute. Sir. 1 minute. Sir. 1 minute. Ready, bhai. Sir. Okay. Sir. You don't want. Sir. I can't. Sir, ask him to sit. Ask him to sit yeah. and not to rise till I ask him to rise. Yeah. Sir, I cannot do that, sir. Sir, anyway. Then do you want me to act? I can. Sir. 1 minute. Go ahead. Sir, I want to make it very clear. The Minister for Minority Affairs is misleading this house. I want to put it on record. I want to. After him. I want to put it on record. My own dissent note. Introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up You from can there. take recourse to law. That I'll authenticate it. Write to me. Sir, I'll authenticate it. Number Write one. to me, I'll take note of it. Number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called. Minutes of meetings were not given. Responses of witnesses were not provided. Presentations were not provided. Discussion among JPC members were not done. Key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with. And key witnesses were not called. And dissent was redacted. 1 minute. That is why we say this report is not complete. ये report फर्जी है. इसको वापस करना चाहिए. इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए. Saket, 1 minute. 1 minute. Sir, my limited point here. Yes, within good. 1 minute. I'm glad. Within Limited 1 focus minute. point. Limited, sir. This is not a religious issue. This is a constitutional issue. Now, sir, I would like to request, because the Honorable Minister, Mr. Bhupendra Yadav, read a point of order, and then... What the point of order? No, I'm coming. It's my... The House is in order. Go ahead. No, so he spoke about redactions in any dissent note that can be done in a JPC. The minister said that dissent notes have been annexed. I would like to ask on the record whether half pages of dissent notes have been redacted, Fine. calling them unparliamentary, because that is unconstitutional. Okay. That is censorship, sir. Fine, good. So good minister point. should respond if any redaction has been done in the dissent okay, notes, fine. sir. Okay, General. Now, Honorable Minister, and mind you, it is for the first time in the history of this country that a Buddhist is a minority affairs minister. Am I right? Thank you, sir. Yeah. A matter of pride to the entire global community. So, Thank you for reminding. Honorable Minority Affairs Minister, also Chairman, sir. Parliamentary Affairs Minister, pointed question, reply. Sir, He is First of all- a Buddhist, a global reputation. sir, After. आपको सर मेरा ये कहना है एक नजीमुल जी No, everyone take. 1 second. अरे जॉन ब्रिटस एक John, you know I compensate. Take your seat. सर Sir, you are one of the very polite members in chamber. Be a polite member here also. Be a polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir, only Honorable Minister for Minority Affairs. नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेस करना है तो वो
अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगोरिकली ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है ऑन व्हाट बेसिस? एविडेंस तो रखी जाती है। ऑनरेबल मेंबर्स, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी? कहा कि जेपीसी में अच्छा से विटनेस लोगों को सुनवाई नहीं हुआ और कहा गया कि और टाइम देना चाहिए था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेंबर सब सुन रहे हैं, जितना जेपीसी बिल पे काम किया है, आज तो कोई जेपीसी ने उतना काम नहीं किया है। हजारों लोगों को सुना गया है,